In this video, I will be talking about the diseases. Okay, so if we take the entire human population, out of this entire human population, only 10% population are having diabetes. Okay, now diabetes can be divided into two types, type 1 and type 2. Now, again, if you take the 100% of people who are having diabetes, now out of those, 10% are having type 1 diabetes and 90% of them are having type 2 diabetes. So first I will be discussing type 1 diabetes, then I'll move on to the type 2. Okay. But first let us understand the general idea, exactly what happens in case of diabetes. Now in diabetes, what happens is in the blood we have very high glucose. Okay, very high amount of glucose are there in the blood, but very less amount of glucose is present within the cell. Because what happens is that the cells are not able to take up the glucose. That's why this happens. Okay. So the blood glucose will be very high, but very less amount of glucose will be there in the blood. So ultimately what will happen if the cell is not getting enough amount of glucose? Now we all know that glucose is the major source or the primary source of energy. So the cell will starve, okay, and they will be very low energy. That's what happens, okay, basically in type 1. Okay, so the type 1 diabetes mellitus is actually a genetic abnormality. Why it is called a genetic abnormality? Because what happens is that the immune system, there are certain cells in the immune system which starts attacking its own cell. So what happens? There are specific cells which attacks the beta cells of the pancreas. Now we all know that cells are responsible for producing insulin. So what will happen if the beta cells dies? What will happen? The insulin will be less. So that's what happens out here. Okay. So the type 1 diabetes, it's because the cells are killed by the immune system. It is also activated by type 4 hypersensitivity. It is a cell mediated immune response, and it is also an autoimmune disorder. Okay, so basically it has got a genetic factor. And if somebody is supposed to have diabetes mellitus type 1, then it cannot be prevented. Okay. Okay, now let's see what happens in normal pathway. Normal pathway means what happens generally in a person who does not have diabetes. So a person that does not have a diabetes, what will happen? The beta cells of the pancreas, it produces insulin. Okay, there are insulin receptor will take up that insulin, and what will happen in the muscles and in the adipocytes? What will happen? It will give a positive signal to the glucose receptor. These are all the GLUT receptors. Okay, glucose transporters. So from the blood, all the glucose will be taken up by the cell. That's what happens in the normal person that does not suffer from diabetes. Now, let's see what happens if a person is suffering from diabetes type 1. So, in a type 1 patient, what will happen is the pancreatic beta cells are getting destroyed. Okay, the beta cells are getting destroyed. And the problem is when the 90% of cells are already destroyed, then only the symptoms will start to show up. That is a huge problem. Okay, and as the beta cell will destroy, then what will happen? There will be no insulin. If there is no insulin, then the blood glucose will be very, very high. So that's what the problem is in case of type 1 diabetes. Okay, so let's see what happens. So our blood glucose is very high. Okay, very high amount of blood glucose is there. Now when there is high amount of glucose, what will happen? The adipocytes and the muscles will try to take up that particular glucose. So the glucose will, what will happen? The glucose will enter, okay, from the blood. It will try to enter the muscle and the adipocytes, but the muscle and adipocytes are not able to take up the glucose. That's why I made this particular sign. Okay, they are not able to take up the glucose. Why? Because there is no insulin only. So since they are unable to take up the glucose, then again for energy we need glucose. Glucose is the primary source, so they have to go for an alternate pathway. The alternate pathway for adipocytes is it will break down the fat and get energy. So lipolysis is happening in case of adipocytes. Okay, and in case of protein, in case of muscles, it will break down the protein by proteolysis to get energy. So this is how we are getting the energy for a diabetic type 1 patient. But ultimately, the amount of energy that glucose is supposed to give, that is not done. Okay, because that's not fulfilled because we have no glucose only. So the overall there will be less amount of energy in the body. So there will be low energy. Now, in order to combat this problem, what will happen, like not to combat, but actually the result will be that there will be a weight loss of that particular individual. Okay, that person will they'll lose a lot of weight, and there'll be a huge amount of hunger because this energy is less, so that person will be eating more. So poly means many, sorry, many. So they will suffer from polyphagia. Polyphagia means it's a number one symptom of type 1 diabetes, where they'll be eating a lot because the cells are not getting enough energy. So they'll be eating a lot. Okay. Okay then.
After eating a lot, okay, what are the other symptoms that we have for type 1? Again, the blood glucose is very high. So what will happen now? The blood needs to be excreted out. So the blood glucose, like high amount of glucose, will enter inside our kidneys. Okay. Now, kidney will produce urine. So yeah, it will produce urine. But the problem is, we are not supposed to excrete out glucose. But the urine will be containing, like, or the urine will be having glucose present in it. Okay, and what will happen now? Glucose is osmotically active compound, so glucose will attract more water in the urine, so the quantity of the urine will increase. This is called as polyuria. Poly means many, urea means urine, so there will be huge amount of urine. Okay, this is another symptom. Okay, then there is another symptom. What happens again, like just now I told you that in case of glucose attract more water, so what will happen? The water from the blood will be taken up by the cells. They'll try to take up these particular cells. But the problem is, since the water is taken up by kidney, so the cells will not get enough amount of water, so they will become dehydrated. So therefore, our body will develop thirst, like thirst will be very thirsty for water. Okay, this is called as polydipsia, like very very thirsty for water. This is also another symptom. Okay, so far we have discussed how many symptoms? Three symptoms. No, yeah, four symptoms actually. Polyphagia. Polyphagia means we'll be eating a lot because less amount of energy is there. Then there's another symptom called as glycosuria. Glycosuria means glucose is present in the urine. Okay. Then the third symptom is polyuria. That means a huge amount of urine will be produced because with along with glucose, water will also enter inside the urine. So huge amount of urine. And the fourth one is polydipsia. That means since the cells are all dehydrated because all the water is going in the urine only, so the person will be very thirsty. That is called as polydipsia. So these are the four major symptoms of type 1 diabetes. But there is fifth symptom as well. This is not exactly a symptom. This is another problem or a disease that they have, which is called as diabetic ketoacidosis. Okay, this is another disease which will be there only in type 1 diabetes patients. Okay, now what happens in this particular case? So in diabetic ketoacidosis, the amount of glucose in the body is very high and the amount of insulin is very low. So overall what happens? The energy is low. Okay, the overall energy is low because glucose is the primary source of energy. So in this case, what will happen? The adipocytes mean the fat cells. From there, what will happen? The fat will be broken down into fatty acid derivatives. Now, our ultimate target is to make energy. So, what will happen? This fatty acid derivatives will enter inside the liver. So, we'll get some energy, yes, but what will happen to the derivative? It will go inside the liver, and inside the liver, it will produce a very problematic compound. A very, very problematic compound which is called as ketone bodies. So, the concentration of ketone bodies will increase. This is not good. Okay, when the amount of ketone bodies increases, the acidity of the blood increases, which is also known as ketoacidosis. Therefore, we call this as diabetic ketoacidosis. Okay, so what are the symptoms? Symptoms are there'll be nausea, there'll be vomiting, there'll be mental state changes, and there'll be acute cerebral edema, which is not at all good. Okay, along with that, in case of diabetic ketoacidosis, another problem is there. The blood potassium level is very high, but again, the cells are not able to take it. So therefore, the amount of potassium in the cells is very, very low. So ultimately, the person will be having very low amount of potassium in their body. Okay, so very low amount of potassium and very low amount of glucose in their cells. Okay, but in the blood it's very high. But क्या फायदा? क्योंकि वो सेल से मतलब blood से सेल में आ तो नहीं रहा है, but हमें तो सेल में चाहिए है ना? Blood में चाहे कुछ भी रहे, it doesn't make any sense until unless it is getting inside our cells. Then only our body can use it. Okay, so फायदा नहीं होता है कुछ भी. And okay, now another problem is suppose that particular person is having a lot of stress. तो स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? रिलीज होगा क्या? एपिनेफ्रिन रिलीज होगा. Epinephrine will release glucagon. Now remember, this person actually requires insulin, but body उल्टा कर रहा है. वो क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहा है. So ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो क्या होगा? ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो तो और इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो और यूरिन में चला जाएगा एंड और भी ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा. सो बेसिकली उल्टा ही हो रहा है. सो दीज पेशेंट्स इफ दे टेक स्ट्रेस देन द सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स. Okay, what are the treatments? The treatments is good thing that insulin works इनके लिए, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इंसुलिन दे दो, फ्लूइड्स दे दो, इलेक्ट्रोलाइट्स दे दो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स विद पोटेशियम and they'll be fine. So these are the treatments for type 1 diabetes.
Now, moving on to diabetes mellitus टाइप 2. Now what happens in diabetes mellitus टाइप 2? टाइप 1 में क्या प्रॉब्लम था? इंसुलिन ही नहीं था. बट इन दिस केस इंसुलिन इज प्रेजेंट, इट्स वेरी मच देयर इन द बॉडी. द प्रॉब्लम इज कि इंसुलिन के लिए बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. इवन इफ जितना भी तुम इंसुलिन दे दो, दीज पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, एंड द रीजन इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, देर इज नो ग्लूट रिसेप्टर या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो टारगेट सेल में है ही नहीं. जैसे आई हैव मेड अ डायग्राम आउट हियर. सो आउट हियर इट्स अ सेल, ठीक है, एंड दिस सेल हैज गॉट दिस इंसुलिन रिसेप्टर्स फाइन, बट वेयर इज द ग्लूकोज रिसेप्टर, इट्स नॉट प्रेजेंट ओनली. सो क्या हो गया, ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, बट सेल ले ही नहीं पा रहा है उसको अंदर. क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है, ट्रांसपोर्टर ही नहीं है. Now, what are the causes? Causes here है obesity, lack of exercise, hypertension, and it can be genetic as well. Now, but the good thing of this diabetes type 2 is एक तो type 2 ज़्यादा popular है, मतलब ज़्यादा common है, not popular, ज़्यादा common है. Like अगर like if you take 100 people having diabetes, उसमें से 90 people are having type 2 only. But the type 2 diabetes is somewhat preventable. That's a good thing about type 2 diabetes. It can be prevented. But एक बार हो गया तो it cannot be done anything. Like then we have to go for treatments and all. But it can be prevented. जिसमें बेसिकली क्या होता है, द पर्सन हु इज ओबीज they'll have excess fat. और एक्सेस फैट अगर होता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन कॉजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस. दिस इज टाइप 2 डायबिटीज. जो बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके पास इंसुलिन होता है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा होता है उनके बॉडी में. प्रॉब्लम इज कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस टाइप 2. अच्छा, सो बेसिकली टाइप 2 में हो क्या रहा है, तो फिर ब्लड ग्लूकोज जो है वेरी वेरी हाई, ठीक है, एंड बस द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हैज टू बी इंक्रीज. देखो, इंसुलिन उनका बॉडी में है लेकिन काम तो नहीं कर रहा है ना, तो अब बॉडी क्या करेगा, वो दिमाग मतलब जो हमारा ब्रेन है, विल गिव सिग्नल कि और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो. सो व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स. तो बीटा सेल्स क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब बेसिकली रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अपना साइज भी इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करते करते बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. And जब बहुत, अब देखो हाँ, तुम अगर एक बॉडी के एक पर्टिकुलर सेल को या सेल टाइप को बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, तो आफ्टर अ टाइम उनको एग्जॉस्शन आ जाता है एंड दे विल स्टार्ट डाइंग, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग. काम करने का भी लिमिट होता है. सो व्हाट हैपेंस दैट दे विल स्लोली स्टार्ट डाइंग. ओके, इसकी वजह से ना, इफ द बीटा सेल्स डाई, देन व्हाट विल हैपन, द इंसुलिन प्रोडक्शन विल डिक्रीज एंड द ब्लड ग्लूकोज विल इंक्रीज. ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ब्लड में जो वाटर है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है. सो अगेन वी विल हैव दिस हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है. नाउ हाइपरग्लाइसेमिया वही चार सिम्टम है जो मैंने पहले डिस्कस किया था. क्या क्या है? पॉलीफेजिया, मतलब ज्यादा खाना खाएंगे क्योंकि एनर्जी कम है. पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन होगा. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज ऑस्मोटिक, लाइक वो क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज कर देता है, तो ऑस्मोटिकली अट्रैक्ट करेगा वाटर को, तो उसके साथ वाटर भी जाएगा यूरिन में बहुत सारा. पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, थर्स्टी बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन. एंड ग्लाइकोसूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. So all this problem will be there. Okay, and there's another term I have written, amylin buildup भी हो जाता है इसके साथ साथ. क्यों? अब देखो हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जब इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है साथ में amylin buildup भी इंक्रीज होता है. बिकॉज इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, जो इंसुलिन सिंथेसिस के टाइम पे मैंने पढ़ाया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट व्हेन द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इंसुलिन टू अदर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो रिलीज्ड. इंसुलिन के साथ अमाइलिन और इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है. वेट, लेट मी शो इट टू यू. या देखो, बीटा सेल में जब इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, सो इंसुलिन के साथ एमाइलिन एंड सी पेप्टाइड वेर आल्सो रिलीज्ड, ठीक है, तो बेसिकली एक साथ रिलीज होता है. सो देयरफॉर एमाइलिन बिल्डअप विल आल्सो टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर टाइम. सो एमाइलिन बिल्डअप इज आल्सो टेकिंग प्लेस, ठीक है. ओके, ये हुआ, तो ये सब प्रॉब्लम हुआ. बट द गुड थिंग इज कि इसमें ना, देयर विल बी नो कीटो एसिडोसिस. यहाँ पे कीटो एसिडोसिस नहीं होगा इन टाइप 2 डायबिटीज. सो यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है. ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट इज दिस शैल बी वेट लॉस, द पर्सन हैज टू गो फॉर एक्सरसाइज, उनको हेल्दी डाइट खाना है और एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेना है. एंड इफ दे डू ऑल ऑफ दिस देन इट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड. क्योंकि ये जो है ये जेनेटिकली उतना अफेक्टेड नहीं होता है. इट्स मेनली अ लाइफस्टाइल डिजीज. टाइप 2 डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. ओके, एंड द टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. So that is actually type 1 is more dangerous as compared to type 2, क्योंकि type 2 preventable है, type 1 preventable नहीं है. Okay,
Okay, finally the last three types. Okay, gestational diabetes. Gestational diabetes means वो वाला diabetes जो होता है pregnant woman के body में, and this it starts at the third trimester and it goes on till parturition. Basically जो hormonal disbalance होता है female के body में उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने parturition लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि as soon as the baby will come out तो डायबिटीज उसका ठीक हो जाता है। बेसिकली क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से ये वाला डायबिटीज होता है। सो व्हाट हैपेंस इज एज द बेबी इज लाइक टेकन बर्थ, वो बर्थ हो जाने के बाद जब तक उसके बॉडी में वो हार्मोन का इफेक्ट रहेगा, till that time she will have diabetes, but slowly the symptoms and all will decrease and she'll go back to normal very very soon. Then the other one is drug induced diabetes, and there are some drugs that can induce diabetes in certain patients. Okay, and the last one, diabetes insipidus. Now ये जो diabetes insipidus है ना, it is no way related to pancreas, क्योंकि है ना directly insulin या फिर glucagon से related नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस इज बेसिकली टेस्टलेस यूरिन, मतलब ये वो वाला यूरिन है जिसमें, मतलब इन पेशेंट्स का जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 पढ़ा था तुम लोगों ने कि उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट था यूरिन में, ग्लाइकोसूरिया हो रहा था उनको, है ना। तो इसी केस में उनको ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा बिकॉज दे डोंट हैव यूरिन। इनका जो प्रॉब्लम है इट इज नॉट रिलेटेड टू पैंक्रियास, इनका जो प्रॉब्लम है इट इज रिलेटेड टू एडीएच जो कि आता है पिट्यूटरी से। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस वन। Okay, so what happens out here? So we have hypothalamus, ठीक है, यहाँ पे मैंने normal pathway दिखाया है। Okay, so we have hypothalamus, hypothalamus में we have SON, supraoptic nuclei। ये activate कब होगा? ये activate होगा when there is thirst, like suppose a person is dehydrated, okay, and उनका osmolality increase हो गया। But this is the normal range of osmolality in a normal human being, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम से मतलब जिसका डिजीज नहीं है, ये इसका नॉर्मल रेंज है। ओके, सो अगर ये इंक्रीज हो गया, सो ये सब क्या देगा, सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को एंड सुपरऑप्टिक न्यूक्लियाई को। सो वहां से इट विल गेट पॉजिटिव, लाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड और वैसोप्रेसिन, इज द सेम थिंग, दो अलग अलग नाम है, ठीक है। सो इट विल गो एक्ट ऑन द किडनी। किडनी में कहा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सो आई हैव ड्रॉन वन सेल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब इसमें है तुम्हारा ये एडीएच रिसेप्टर, एडीएच रिसेप्टर में जाकर के वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच जाके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको, एक्वापोरिन को। इससे क्या होगा, ल्यूमन में जितना भी वाटर है वो चला जाएगा ब्लड में। तो क्या हो जाएगा, ब्लड में जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो हो जाएगा इंक्रीज। ये होता है नॉर्मल केस में। सो बेसिकली हमारा बॉडी एडीएच तब रिलीज करता है जब जब हमें वाटर निकालना है बॉडी से, ठीक है, तब रिलीज होता है। बेसिकली ये जो एडीएच या वैसोप्रेसिन है इसका काम होता है बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर डायबिटीज इंसिपिडस हो गया तो क्या होता है। तो इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है, जो एक्वापोरिन है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, ठीक है। ये जो जो वाटर को लेने का काम करता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन विद इन द सॉरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द यूरिन। सो द पर्सन विल हैव पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो ऑस्मोलैलिटी विल इंक्रीज, द थर्स्ट विल इंक्रीज, पॉलीडिप्सिया, एंड सो दिस इज diabetes insipidus. Okay, these are the symptoms. So that's all about the diseases related to pancreas. If you have any doubt, you can ask me.